केस पर केस करते जा रहे हैं। हम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं जो हुजूर। क्या केस पर केस करते जा रहे हैं? इस बार फिर 2020 में फिर एक केस कर दिए। How many cases are there between the parties? I think there are Big 5-6 cases, Your Lordship. I am reminded of an very old song in Hindi. वो तो हर रोज रुलाते थे घटाओं की तरह, हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गया। मेरू शायरी का शौक रहा है क्या आपको? This is the situation, Your Lordship. बार्गेनिंग करने से क्या फायदा है? अभी आपका मंगा लेंगे बैंक अकाउंट और ये सब। डॉक्टर और वकील का इनकम टैक्स रिटर्न से काम चलता है। I sincerely apologize for my yesterday's statement, Your Lordship. I had said that against the order of previous order dated 2/11/18, 4-5 installments had been paid. That's what I had said yesterday. My friend corrected me, and I stand thankful to him. But I have checked up with my client, Your Lordship, the entire position, that out of the 45 installments that have become due, only 18 installments have been paid, and a sum of rupees 6,75,000 still remains to be paid. ठीक है, let me hear him. That is the situation. Let me hear him. Petitioner is ready to clear all the dues. Sometimes may be granted. Clear all the dues? और जो ड्यूज इनका एरियर है जो You are aware of the area? Are you not aware? केस पर केस करते जा रहे हैं। हम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं जो हुजूर। कहा गया प्रैक्टिस मेरा बंद हो। क्या केस पर केस करते जा रहे हैं? इस बार फिर 2020 में फिर एक केस कर दिए। क्या है केस? 494 का केस। 494 का तो केस आपका, इसका मतलब बाइगेमी का केस हो गया ना। तो आपने सेकंड मैरिज कर लिया है क्या? पता नहीं। सेकंड मैरिज किया है, Your Lordship. He has married a lady named Pooja Kumari, and has 2 children from that marriage. अच्छा, 2 children are also there. The 2 children are also there, yes, Your Lordship. Which he is not committing over here, but the fact remains that this is the situation. Apart from this fact, How many cases are there between the parties? 3 cases. I think there are Three 5-6 cases, Your Lordship. 5-6 cases. Yes, Your Lordship, and the cases have started with this thing. Actually, the marriage took place sometime in 2009, and in 2010 itself, my client was kicked out of the house on the ground of dowry, and thereafter this case was against domestic violence was started. Now, Your Lordship, there were other cases filed because of the violent action taken by the petitioner in this case. And Lordship, the last case which he talks was against, and permit me, was against, it was like this, that against one of the cases, the Chief Judicial Magistrate had ordered him to take my client back to his house. Instead of taking my client back to the house, he took her to a hotel in Bhagalpur, assaulted her, took away her mobile, and left her on the road. And that is why this case was filed, a complaint case was filed, which was later turned into an FIR, against which he has applied for a bail. And for that purpose, the last installment against this was paid, 25,000. Lordship, ये बोलते हैं कि मैं कहता हूँ, I am reminded of an very old song in Hindi. वो तो हर रोज रुलाते थे घटाओं की तरह, हमने एक रोज रुलाया तो बुरा मान गया। वाह, क्या बात है। This is what he said. Very old song, Your मेरू Lordship. शायरी का शौक रहा है क्या आपको? हुजूर, ऐसा है कि उम्र तो गुजर ही गया है। नहीं, उम्र क्या गुजरता है। लेकिन this is the situation, Your Lordship. मतलब my client, she is a deserted lady who is absolutely on roads, no job, nothing. She doesn't have the wherewithal to go on fighting with such a person. And Your Lordship, he says that I am doing it
at my sweet will. I'm least interested in pursuing such cases. I am interested that the award that has been given to me may be paid. That's all. Nothing more. Has he ever shown the inclination to pay? I'll tell you, Your Lordship, that in one other case, that was a case of divorce filed by him, he was asked to make a payment, and then he came down to this honorable court. Honorable Mr. Justice Ashutosh Kumar had heard the case was dismissed, and he was asked to pay for that also, but he hasn't paid. No, not yet. Your Lordship, I have got Your conduct nothing. is not good. Lords, I would like to draw attention of the certain sections of the Act, Lords. Kindly see. पहले इसको क्लियर कीजिए आप, हम तो करेंगे हुजूर, तो करेंगे। इनको इसको क्लियर क्लियर करने दिया जाए हुजूर। उसके बाद हम सुनते हैं आपका। Complaint case is not maintainable. I will hear your case. Presently, the order of maintenance has been, My lords. ये आपको जो कंपनसेशन भी दिया है इसी ऑर्डर से, या इसी के कंपनसेशन 15 लाख रुपया कंपनसेशन भी इसी ऑर्डर से अलाउ किया है। 15 लाख प्लस 5 लाख हुजूर। 15 लाख तो स्त्री धन है मेरा, और 25,000 मंथली है। 25,000 monthly. There are 3 awards given in this case. Where is that order? Lords, order is Lords. Order is Annexure 1, Lords. Annexure 1 इनका है, then there is an appeal in the Annexure 2 है, then page here- 21 relevant है Lords. This is 26 to 13 order. Page 26. 26 to 2013 order. Yes, Lord. Yes. Come to the relevant part. Then he filed an appeal, Your Lordship. आदेश अतः विपक्षी संख्या 1 एवं 3 को आदेश दिया जाता है कि वे आवेदिका को 2 माह के अंदर 15 लाख रुपया वापस करें, साथ ही 5 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दें। आवेदिका यदि अपने ससुराल में रहना चाहे तो उसे अपने घर में रहने हेतु कमरा आवंटित करें एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आवेदिका को भरण पोषण हेतु 25,000 रुपया। Yes. Against this, Your Lordship, he filed an appeal. Yes. The court of the additional district and session judge Lakhish Rai, which was heard, and his appeal was dismissed. So appeal remained pending. No, No, the appeal in the district judge had It has now been disposed it's of. disposed of, disposed of. This is wide order dated 28 March 18, my lords, and the appeal has also been dismissed. my lords. Yes, Your Lordship, that's the situation. Thereafter this revision. Presently, how much is the outstanding amount? 6,75,000 against that order of Maintenance. last order of this court. Maintenance. Maintenance, only maintenance, 35,000 per month. The other, the street dhan and compensation have not been ordered as yet because it is under revision. Your Lordship. Pay that 6,75,000. अभी हम कुछ दे देते हैं, धीरे धीरे कितना लाए हैं अभी? 1 लाख रुपया भी दे देते। 1 लाख से क्या होगा? 1 लाख से क्या होगा? 675 आपको देना है, तो अभी आप दीजिए इनको within 15 days 50% and next 15 days में another 50%. Two months. 2 months. 6 months का। Lordship, बार्गेनिंग करने से क्या फायदा है? अभी आपका मंगा लेंगे बैंक अकाउंट और ये सब। हम तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी दिए, ITR भी फाइल किए हुए। डॉक्टर का कोई इनकम टैक्स रिटर्न पर चलता है क्या काम? हुजूर इनकम टैक्स डॉक्टर और वकील का इनकम टैक्स रिटर्न से काम चलता है। अकाउंट डिटेल भी मांगा जाएगा, वो जो यही हाल है। देखिए पीछे हंस रहे हैं। इन्होंने जमा किया हम वही दिखाएंगे। हुजूर इनकम टैक्स जो इन्होंने दिया हम वही दिखाते हैं। इन्होंने अपने ही कहा है कि इनके पास में इनका आमदनी 8,72,000 रुपया है इन द इनकम टैक्स रिटर्न, योर लॉर्डशिप।
तो हमको तो 1/3 है, 9 लाख का हमको तो 3 ही लाख है। एंड ही सेज कि मेरा 8,72,000 ग्रॉस। 8,72,000 वो कह रहे हैं कि वो तो ग्रॉस दिखाए। हुजूर तो ग्रॉस से ही ना हमको देंगे। नौकरी करते हैं, प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस है। प्राइवेट नौकरी भी करते हैं। ही इज आल्सो इन ए गवर्नमेंट सर्विस। नहीं, नौकरी नहीं करते हैं। अभी आप दिखा दीजिए नौकरी वाला से। आप एक स्ट्रोक ऑफ पेन से दे सकते हैं इनको पूरा पेमेंट। अच्छा, एनीवे जो भी है सही चीज। और आपको अपना कंडक्ट दिखाना चाहिए बिल्कुल बोनाफाइड। एक्चुअली हम देश 6,75,000 रुपया आप एक बार में दे सकते हैं। अभी इन्हीं के चलते हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। किनके चलते? ये केस कर दिए हैं हम, एंटीसिपेटरी वेल के लिए अप्लाई किए। नहीं तो ठीक है, केस 494 में की है ना, 494 में एंटीसिपेटरी बेल होगा। नहीं, और सेक्शन से और 494 इज ए बेलेबल ऑफेंस। 365 भी बहुत सारा ऑफेंस में किए हैं। 341, 342, 365, 323 करके सब कुछ करके बहुत सारा सेक्शन। 365 क्यों लग गया आपको? FIR हमने नहीं किया है सर, हमने कंप्लेंट किया आपने है। किया है? हमने कंप्लेंट किया है। आप हमको मारे पीटे हैं। लूसी कुमारी मेरा कंप्लेंट फोन किया, वो FIR में वो तो दिए हैं, घर के बाहर निकाल दिए हैं, घर से सब बाहर। कुछ कर दिए हैं। हुजूर अब हम ही पर दोषारोपण है कि हम इनको प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। लेकिन अब आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन मत कीजिए। लॉर्डशिप अब आप लिटिगेशंस पर लिटिगेशंस बढ़ाइए नहीं। नहीं हुजूर, हम बढ़ाने के शौकीन नहीं है। हमारी क्लाइंट बहुत चीजें डेजर्टेड लेडी नहीं ठीक है। एंड हमको कोई शौक नहीं है हुजूर इनसे लड़ने का। She is a deserted lady. This is unfortunate. But now she is before the court. Court has given her an award. हम We are trying to get that award implemented. But in the meantime, you don't go on filing cases. I will not, your lordship. I आप फाइल कर रहे हैं तो कहते हैं आई विल नॉट। बार केस हुजूर बार ये ऐसा है, ये आपको 675 देंगे। हुजूर ये बार लीजिए 675 अभी आपको देंगे ये 1 महीने के अंदर। जी। उसके बाद सारे केसेस का लिस्ट बनाइए और इसको मीडिएशन में भेजते हैं। एक एमिकेबल सेटलमेंट। एक बार जा चुके हैं। नहीं हो सकता है मीडिएशन। सर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस में तो आपको करना चाहिए। मीडिएशन फेल हो गया कि इनका जो हुजूर जरा काउंटर दिखा देता। छोड़िए, अब आप पहले पेमेंट करके आइए तब हम सब देखेंगे। आप पेमेंट करके आइए तब देखते हैं। लिखिए, मिस्टर हंसराज, Client counsel for the petitioner submits on instruction that the petitioner is ready to pay the entire outstanding amount which has become due on account of the award of maintenance of rupees 25,000 per month to the petitioner by order dated 13/11/2013 नहीं 26/2/2013 passed by learned Chief Judicial Magistrate Lakhisrai. Will stop. Learned Counsel submits that the payment would however be subject to his rights and contentions in the present application. Will stop. Next. Learned Counsel has submitted that the petitioner will pay the entire outstanding amount which has been presently assessed at rupees 6,75,000 approximately within 1 month from today in 2 installments. 2 months. ठीक है, within 2 months from today, within 2 equal installments. Full stop. As a matter of good gesture, he will good gesture towards his wife. He will pay sum of rupees 1 lakh. 1 लाख तो तुरंत दे दीजिए अभी। 1 lakh
immediately within 1 week from today. Full stop. Next, account number है आपका? अकाउंट नंबर है जी। लॉर्डशिप है? मुझसे से पे करते रहे हैं account इसी Petitioner अकाउंट में is पे कर रहे हैं जिसमें कर रहे हो having the bank account number of his wife, and the amount will be credited in the said account. Full stop. Next, subject to the compliance with the above undertaking, no coercive action shall be taken against the petitioner for the present. Release this matter after 1 month under the same heading. अगर पेमेंट नहीं करेंगे then you can mention the matter. लॉर्डशिप आई देन अगेन आई फाइल Yes.